तुम्ही बिल्डर नियुक्त करू कशा शकता आमच्या परवानगीशिवाय? जागा आमची, सगळं आमचं आहे. बाहेरची लोक येऊन जर असं आमच्यावर दबाव टाकत असतील रिडेव्हलपमेंटसाठी, ते आम्ही सहन करणार नाही ना. निव्वळ फसवणूक आहे लोकांची फसवणूक. त्यांचे हे घेतात, साईन घेतात, न बदलणारे हे बोलतात, काय बोलतात त्याला, स्टॅम्प पेपरवर साईन घेतात, हे करतात. न बदलणार म्हणजे तुम्ही त्यांचा हक्क हिसकावून घेताय. These small time developers are, I mean, virtually nobody. They are small time chaps. They will just take the local gundas in their hands and, I mean, likely to cheat people. लोकांना फसवण्याचे काम चालू आहे यांचं आहे. तर तुम्हाला खरंच म्हातारे लोकांचा कळवळा आहे ना, तुम्ही सर्व ऑन दी स्पॉट सगळंच ओपन करा ना. तुम्हाला जे परमिशन मिळणार आहेत, काय मिळणार, तुम्ही या लोकांमध्ये या मिसळा आणि त्याच्यात बोला. विश्वासानावर विषय चालू आहे आणि त्याच्यावरच सर्व चालू आहे. कागद दाखवल्याशिवाय तुमचं स्ट्रक्चर ऑडिट नाही, तुमचा बिल्डर कॅपेबल नाही, तुमचा आर्किटेक्चरिंग प्लॅन नाही. Mathadis themselves should be very careful and should not proceed unless everything is clear and it is in writing and it is registered and legally enforceable. तुम्ही तर 450 देणार आणि 390 देणार, ते आम्हाला मान्य नाही. कारण आमची एवढी मोठी जागा आहे, त्याप्रमाणे आम्हाला जागा तशी भेटलीच पाहिजे. तर 10% तुम्ही आम्हाला हे करताय आणि 90% तुम्ही तुमचा फायदा बघत असेल, ते इम्पॉसिबल आहे. ओनरला आम्ही जे सभासदांना 10% दिल्या, 90% बिल्डरच्या खिशात आहे. इथं भरपूर गोळमाल चालला आहे आणि ह्याचा फटका सगळ्या सभासदांना मिळणार आहे. 90% of the घर builder द्वारा, I mean, it's a ridiculous proposition. I don't know how he can do it, because more than 50% should be at least the Mathadis who are already residing there. So that is basically for Mathadis to ensure that their interests are protected. तुम्ही बिल्डर नियुक्त करू कशा शकता आमच्या परवानगीशिवाय? जागा आमची, सगळं आमचं आहे. बाहेरची लोक येऊन जर असं आमच्यावर दबाव टाकत असतील रिडेव्हलपमेंटसाठी, ते आम्ही सहन करणार नाही ना. विश्वासानावर विषय चालू आहे आणि त्याच्यावरच सर्व चालू आहे. कागद दाखवल्याशिवाय तुमचं स्ट्रक्चर ऑडिट नाही, तुमचा बिल्डर कॅपेबल नाही, तुमचा आर्किटेक्चरिंग प्लॅन नाही. निव्वळ फसवणूक आहे लोकांची फसवणूक. त्यांचे हे घेतात, साईन घेतात, न बदलणारे हे बोलतात, काय बोलतात त्याला, स्टॅम्प पेपरवर साईन घेतात, हे करतात. न बदलणार म्हणजे तुम्ही त्यांचा हक्क हिसकावून घेताय. माथाड़ियों द्वारा उनके साथ हो रही ठगी के आरोप सुनने के बाद द मेट्रो ने नवी मुंबई के सबसे मशहूर और विश्वसनीय आरटीआई कार्यकर्ता संदीप ठाकुर से मुलाकात की. राज्य के शहरी विकास विभाग, नवी मुंबई महानगर पालिका टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट एवं स्थानिक राजनेताओं पर आलोचना करते हुए संदीप ठाकुर ने माथाड़ियों को अहम सलाह दी. अगर आपके घर को 30 वर्ष पूरे नहीं हुए तो आपको नहीं मिलेगा पुनर्निर्माण का हर फायदा. संदीप ठाकुर ने ये भी जानकारी दी कि अगर घनसोली में निर्मित माथाड़ी घरों को 30 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं तो उन्हें पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, और यदि अनुमति मिल भी गई तो इसमें भी माथाड़ियों का ही नुकसान है. As far as redevelopment, I mean, redevelopment के प्रोविजन जो है ये प्रेजेंट DCRs में, वो सिडको के बिल्डिंग के लिए ओनली आफ्टर सिडको बिल्डिंग इज मोर देन 30 years old दे आर एप्लीकेबल. अदरवाइज रीडेवलपमेंट के जो एडिशनल बेनिफिट्स है, दोज आर नॉट अवेलेबल टू बिल्डिंग्स विच आर लेस देन 30 years old. And additional FSI which is given to everybody will be available, but that will be substantially lesser than the otherwise FSI which will be available to redevelopment projects which are applicable only to SIDCO buildings which are of 30 years of age. घनसोली प्रकल्प के आर्किटेक्ट डायमेंशन का एक पुनर्निर्माण प्रकल्प है खड्डे में. संदीप ठाकुर ने जानकारी दी कि घनसोली का पुनर्निर्माण प्लान उसी आर्किटेक्ट का है जिसका एक पुनर्निर्माण प्रकल्प वाशी सेक्टर 10 में उल्लंघन के चलते खाई में पड़ा है. रेनबो डेवलपमेंट केस में रहीवासियों को आज तक उनके घर निर्मित होकर नहीं मिले हैं. Now I am told that this Kalamboli is being managed by one architect called Dimensions. Now he has one building which he has constructed in sector 10 in Vashi,
which is lying unoccupied and which is not been given commencement certificate despite constructing 15 floors. I mean, and NMMC also entertains these people. They don't take any action against these people because they manage these people. 50% प्लॉट और प्रकल्प का फायदा मिलना चाहिए माथाड़ियों को। सिंप्लेक्स के घरों के मालिक माथाड़ी कर्मियों ने ये कहा है कि उन्हें केवल 10% प्लॉट घर बनाकर दिए जाएंगे, जबकि बिल्डर के पास 90% रहेगा। ओनरला आम्ही जे सभासदांना 10% दिल्या, 90% बिल्डरच्या खिशात आहे। इथं भरपूर गोळमाल चालला आहे आणि ह्याचा फटका सगळ्या सभासदांना मिळणार आहे। इस पर संदीप ठाकुर ने कहा कि माथाड़ियों को कम से कम 50% प्लॉट पर घर और सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। 90% of the घर builder द्वारा, I mean, it's a ridiculous proposition. I don't know how he can do it, because more than 50% should be at least the Mathadis who are already residing there. So that is basically for Mathadis to ensure that their interests are protected. त्यांचं स्वतःचं जे काय फायदा आहे तो त्यांना म्हणजे जो हक्क आहे तो त्यांना मिळतो की त्यांनी बघितलं पाहिजे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनकी हाई कोर्ट में दर्ज PIL पर दिए गए ऑर्डर के अनुसार हर घर पर एक कार पार्किंग देना भी अनिवार्य है। Every flat in Ghansoli which is being constructed, one parking space has to be given. Car parking space has to be given. माथाड़ी सिर्फ पालिका में दिए गए CC के साथ घरों के फाइनल प्लान पर करे भरोसा। संदीप ठाकुर ने ये भी सलाह दी कि अभी माथाड़ियों को जो भी प्लान दिखाया जा रहा है वे उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें और केवल वही प्लान को देखें जो CC मिलते समय पालिका द्वारा मंजूर किया जाएगा। पारदर्शकता तर पूर्ण पाहिजे, कारण कमेन्समेंट सर्टिफिकेट मध्ये अप्रूव्ड प्लॅन असतो, त्यात अप्रूव्ड प्लॅन मध्ये काय तो बांधतोय हा बिल्डर ते सगळं अप्रूव्ड प्लॅनमध्ये असतं। कुठच्या खोल्या बांधतोय, कुठच्या फ्लोअरवर बांधतोय, त्याची एरिया काय, त्याचा डिस्टन्स काय बाउंड्री वॉलपासून, बाकीचं सगळं अप्रूव्ड प्लॅनमध्ये असतं। तो अप्रूव्ड प्लॅन त्यांनी घेतला पाहिजे NMMCकडून आणि NMMCनी खरोखर तो ॲक्च्युली तिथे डिस्प्ले केला पाहिजे, विशेषतः या रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टमध्ये। म्हणजे काय बाकीच्या सगळ्या लोकांना कळेल की बाबा काय बांधलं जातं इथे आणि कशासाठी परवानगी दिलेली आहे आणि त्याप्रमाणे बांधतात की नाही तेही लक्ष ठेवू शकतात। आणि आपल्याला कुठचं घर मिळतंय तेही त्यांनी मागितलं पाहिजे की बाबा माझं घर यातलं कुठचं, त्याची ते एरिया मोजू शकतात, कारण कमेन्समेंट सर्टिफिकेट इज ऑलवेज अकंपनीड विथ अप्रूव्ड प्लॅन आणि अप्रूव्ड प्लॅनमध्ये प्रत्येक घर कसं काय असेल वगैरे ते दिलेलं असतं। राज्य नगर विकास विभाग से लेकर टाउन प्लानिंग ऑफिस सभी चलाते हैं भवन निर्माता। संदीप ठाकुर ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि राज्य नगर विकास विभाग से लेकर टाउन प्लानिंग ऑफिस को भवन निर्माता चलाते हैं। ऐसे में अगर पुनर्निर्माण प्रकल्प में जिन लोगों के घर जाते हैं उन्हें जागरूक रहना बेहद जरूरी है। Real estate lobby, everybody knows, manages the town planning department of all the municipal corporations. It manages the urban development department at the state level. So it's virtually, I mean, as far as real estate is concerned in Maharashtra and probably elsewhere too, there is a complete regulatory capture by the developers lobby of the entire town planning process. सीधे साधे माथाड़ी वर्ग के लोगों को धोखा देना आसान है, क्योंकि माथाड़ी वर्ग के लोग सीधे साधे और अबोध होते हैं, उनके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए संदीप ठाकुर ने सलाह दी कि पेपर पर प्रॉपर एग्रीमेंट होना जरूरी है। Mathadi workers and leaders of Mathadi workers should ensure that proper agreements are made. There is clarity on who will get what and how much, and what will be the area they will get, what parking is available elsewhere, whether that parking will be available to the people who are already residing there or only the new people who are coming there. That also should be there. That should be clarified. Now Mathadi workers should help Mathadis, because Mathadis are not that educated and they can be, I mean, they are susceptible to cheating. नेरुल स्थित वाधवा ग्रुप निर्मित पाम बीच रेसिडेंसी माथाड़ियों के साथ धोखे का जीता जागता सबूत। संदीप ठाकुर ने कहा कि माथाड़ियों के नाम पर नावी मुंबई में पहले ही एक घोटाला हो चुका है। नेरुल स्थित वाधवा ग्रुप निर्मित पाम बीच रेसिडेंसी का प्लॉट माथाड़ियों के लिए आरक्षित था, मगर उसमें भी माथाड़ियों के साथ धोखा कर
आज वे 3 करोड़ वाला घर खरीदकर लोग सुख भोग रहे हैं। There are cases where in the name of Matadi, there are big projects like Ameya Cooperative Housing Society in Nerul, that is Palm Beach Residency and all that. These were started for Matadi workers, but they were not basically for Matadi workers at all. Their fictitious names were given, and immediately after the allotment of the plot, the membership was changed and Matadi vanished from the membership, and somebody else is staying now. The houses are worth 4 crores, 3 crores and all that. So can a Matadi afford a 4 crore house? But these are, I mean, because of the regulatory capture, nothing happens to builders. मथाड़ियों ने कानूनी रूप से स्वीकृत एग्रीमेंट के बाद ही पुनर्निर्माण के लिए अनुमति देनी चाहिए। संदीप ठाकुर ने यह भी सलाह दी कि मथाड़ियों को कानूनी रूप से स्वीकृत एग्रीमेंट, जिसमें उन्हें मिलने वाले घर का पूरा नक्शा, एरिया, सुविधा एवं बाकी सब जानकारी हो, उसके बाद ही अपनी अनुमति देनी चाहिए। Mathadis themselves should be very careful and should not proceed unless everything is clear and it is in writing and it is registered and legally enforceable. माथाड़ियों को ध्यान रखना चाहिए कि राजनेता उनके हित का सोच रहे हैं, ना कि भवन निर्माता का। जिस प्रकार घनसोली में आयोजित शिवसेना के कार्यक्रम में मीडिया सवाल ना पूछे और उनकी पोल ना खुल जाए, इस भय में दिखी, इससे ये तो साफ हो गया कि माथाड़ियों के साथ बड़ा धोखा हो सकता है। ऐसे में संदीप ठाकुर ने कहा कि माथाड़ियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रकल्प से जुड़े राजनेता उनके हित का सोच रहे हैं, ना कि भवन निर्माता का। Mathadi workers and all have their political clout also that they should use, but in these kind of situations what is seen is that their leaders themselves are hand in glove with the builders, because builders have quite big war chest in terms of black money and capability to corrupt people and all that. So that should be watched, and they should also ensure that their leaders are properly helping them and are on their side and not on the side of the builders. Bureau Report, The Metro.